Our first topic is algorithm. So in this we are going to discuss how to write an algorithm, what is an algorithm, why we are going to write an algorithm here. The first one is design and analysis of algorithm. In this subject, what we are going to read, what we are going to discuss. That is designing of an algorithm. After designing means after writing the algorithm, we are going to analyze whether the algorithm written by us is good or not. Okay, the first one is algorithm. So why we are going to write an algorithm? What is our basic need here? First, our basic need is to perform the task given by the user. Okay, our purpose is to perform a task. So to perform the task, we are going to develop a program here. So before going to develop a program, we are saying that we have to write an algorithm. So it's always better to write an algorithm before developing a program. And after writing the algorithm, depending on the algorithm, we have to develop that particular program to perform the task here. Why we have to write the algorithm? Why we can't go directly to the program? To explain this concept, let me take a simple example. That is nothing but constructing a building here. Let's say that now we are planning to construct a building here. When we are directly constructing a building and if we get a problem at this floor, say for example, we got a problem at this floor, then what we have to do? हमको ये पूरा बिल्डिंग गिराना पड़ता है, अगेन फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. से फॉर एग्जाम्पल अभी ये फ्लोर पे प्रॉब्लम आ गया, फिर से क्या करना पड़ता है? फिर से इसको गिरा के फिर से एक स्टार्टिंग से फिर से एक बनाना पड़ता है. इसमें कितना टाइम, कितना कॉस्ट, पैसे वेस्ट हो जाते हैं. सो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली कभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं. क्या करते हैं? पहले एक पेपर के ऊपर एक प्लान बनाते हैं. अगर ये प्लान बनाते वक्त अगर हमको कुछ मुश्किल हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक नया पेपर लेंगे, उस नया पेपर के ऊपर फिर से एक प्लान करेंगे स्टार्टिंग से. अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ गया तो और एक पेपर ले लेंगे और उसमें भी कंस्ट्रक्ट करेंगे टिल वी गेट द एग्जैक्ट डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग. एक अच्छा बिल्डिंग का डिज़ाइन आने तक हम लोग ऐसा ट्राई करते रहेंगे. नाउ यू कैन अज्यूम दैट हाउ मच कॉस्ट एंड हाउ मच टाइम वी हैव सेव्ड हियर इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग. अगर हम लोग डायरेक्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करें तो कितना लॉस होगा हमको कॉस्ट वाइज और टाइम वाइज. उसके बदले में अगर पहले ही हम लोग एक प्लान बना के उस प्लान को डेवलप करेंगे, फिर हमको आ गया एक अच्छा सा प्लान आ गया, अभी हम इसको डायरेक्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे, अभी हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो प्लान है वो पूरा प्रॉब्लम से क्रॉस करके फाइनली एक प्लान बन गया है, अच्छा प्लान बन गया है. अभी इस अच्छे प्लान को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे ताकि हमारा कॉस्ट एंड टाइम वेस्ट ना हो. सेम ऐसे ही एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बीच में हो रहा है. डायरेक्टली प्रोग्राम को डेवलप करने से सिस्टम के ऊपर क्या होता है? हमारे कॉस्ट भी अगर कुछ से फॉर एग्जांपल 100 इंस्ट्रक्शंस के बाद इफ़ वी गॉट ए प्रॉब्लम 100th लाइन में अगर हमको प्रॉब्लम है तो क्या होता है? जो 99 लाइन्स लिखे हैं वो पूरा वेस्ट हो जाएंगे. फिर से वो पूरा डिलीट कर से हमको फिर से लिखना पड़ेगा प्रोग्राम स्टार्टिंग से. किधर? सिस्टम के ऊपर लिखना पड़ेगा. इससे हम जो भी हम डेवलपर को पे कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लॉस्ड देयर. सो कॉस्ट भी वेस्ट हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा. उसके बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं? एल्गोरिथम लिखेंगे. एल्गोरिथम क्या करेंगे? एक पेपर के ऊपर लिखेंगे. अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है तो भी ये पेपर थ्रो करके और एक पेपर लेके उस पेपर में फिर से लिखेंगे.
सो इससे क्या होता है, कॉस्ट और टाइम दोनों भी बच जाते हैं. दैट इज द यूज ऑफ द algorithm. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट द algorithm instead of going directly to develop a task here, to develop a program here to perform a task here. This is why we are going for the algorithm. The second one is definition of an algorithm. What is the definition of an algorithm? Definition of an algorithm is, it's the step-by-step representation to perform a task here. Step-by-step representation. Definition. It is a step by step representation to perform given task. इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन टू परफॉर्म द गिवन टास्क. वाई वी आर राइटिंग द algorithm? यूँ ही तो टाइम पास के लिए भी कोई भी नहीं लिखता algorithm. algorithm क्यों लिखते हैं हम लोग? एक टास्क को सेटिस्फाई करने के लिए, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. हमको एक जॉब दिया, टास्क इज नथिंग बट जॉब. हमको एक जॉब दिया है, उस जॉब को रिजल्ट दिखाने के लिए हम लोग algorithm लिख रहे हैं पहले. सो algorithm कैसा लिखना है? स्टेप बाय स्टेप लिखना है. पहले स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में व्हाट वी हैव टू डू, थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू. उसके मीन्स यू कांट राइट द स्टेप्स रैंडमली. रैंडमली मीन्स at the fourth step writing the name of the algorithm, at the second step declaring the variables used, at the first step writing the statements. These are called as random, writing the statements randomly. किधर तो किधर कुछ भी कुछ नहीं लिख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मीन्स फर्स्ट स्टेप राइट नेम ऑफ द algorithm. सेकेंड स्टेप declare the variables you are using. Third step write the statements. Fourth step write the statements. क्या क्या करना है? फिफ्थ सिक्स्थ लास्ट स्टेप stop. Like this you have to write the statements in a order, step by step. एक के बाद, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप के बाद क्या करना है, ऐसा एक ऑर्डर में लिखना पड़ता है. उसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन. क्यों हम लोग लिख रहे हैं? टू परफॉर्म ए गिवन टास्क. दैट इज अ मेन थिंग. ओके, सो यूँ ही तो कोई भी algorithm नहीं लिखता है. एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप ऐसा लिखना होता है. उसको बोलते हैं algorithm. ऐसा जंबल इधर उधर 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 रैंडमली लिखे तो उसको algorithm नहीं बोलते हैं. ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप को सिर्फ algorithm बोलते हैं. ओके, वी कॉल इट एज ए algorithm here. So first we learned why we have to write an algorithm. Second, I explained you the definition of an algorithm. Third, we are going to write a simple algorithms here. I am going to show one or two algorithms here. Okay, first writing the algorithm to perform addition of two numbers. I am going to show the algorithms, and remember students, for the same task you can write n number of algorithms. It can't be like this that to perform a single task we get only one algorithm. It is not like that. To perform a single task you can write n number of algorithms. Okay, that I am going to show you. Example, how to write an algorithm. I am saying that write an algorithm to perform addition of two numbers. Once again I am repeating. Here I am going to show how to write an algorithm. For the example, addition of two numbers here. So what are the steps? How to write an algorithm? Remember here, your first step of your algorithm should be name of the algorithm. First, we generally use a word called procedure. Procedure is nothing but the method we are writing, the algorithm we are writing. Procedure here,
Because I am writing algorithm for addition of two numbers, I am writing name of the algorithm as add. You can write anything here. You can write any name, you can give any name to the algorithm. There is no restriction that what the algorithm name should be. Okay. Here I am writing simply it as a add. The second one is the declaration part. You are going to first, after writing name of the algorithm, you have to make the list of variables used in that algorithm. If I am going for addition of two numbers, generally we think that C is equal to A plus B. So how many variables I am using here? 3 variables I am using. So, and what are the variables data type? Simply I am making it as integers. Integers. How many integers you are taking here? 3 integers. Let's name it as A, B, C. You can give any name to the variables. It doesn't matter here. Okay. Remember here, there is no, generally we use the technical terms like this, but for the algorithm, there is no syntax. Okay. And the third one is, now I am going to write the statements. What are the statements here? Before performing the addition, we have to accept the numbers. Addition करने से पहले हमको A का वैल्यू भी जानना चाहिए और B का वैल्यू भी जानना चाहिए. उससे ही हम लोग ऐड कर पाएंगे. If you don't know the value of A and B, you can't perform the addition here. हम लोग वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते हैं उनको वैल्यूज़ के बिना. तो हम लोग क्या करना है अभी हमको रीड करना है, लेना है. कहाँ से? Through the input devices. Through the input devices we have to take the values. किस का values लेना है? A और B का values लेना है, क्योंकि C is our result here. So I am writing it as a read A. एक हो गया, उसके बाद हो गया read B. I have taken the 2 values here. And what is your next step? Perform C is equal to A plus B. Now I'll write print C because the result is stored in C here. So what I want to see on the screen? Print C. Now there is no limitations here. There is no syntax here that you have to follow only these. Only 1 or 2 rules are there. What are the rules here? You have to write it as a step by step. As I told you can't write randomly here. So पहला step क्या करना चाहिए आपको? You have to write name of the program, name of the algorithm. Second क्या है? पूरा declarations हो जाता है. उसके बाद क्या है? If you want to read something, you have to read it. Then perform the task here. Means addition. उसके बाद जो है उसको print करना चाहिए. This is the basic algorithm we are writing. No need of taking care of any syntaxes because the syntaxes will come when you go for a program. Uske baad, after writing the algorithm, now you decide to which programming language you want to convert this algorithm. आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन कर दीजिए. उसके बाद आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव टू कन्वर्ट स्टेप बाय स्टेप. कौन सा लैंग्वेज में आपको नेम ऑफ द प्रोग्राम कैसे लिखना है, उसके बाद डिक्लेरेशंस हाउ टू परफॉर्म, उसके बाद रीड कैसे होना चाहिए, प्रिंट कैसे होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स हियर. इवन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑपरेटर्स ऑल्सो इफ यू गो फॉर द प्रोग्राम्स, बट देर इज नो हेडेक इन algorithms here. You can use any operator here. C is equal to A plus B लिख सकते हैं आप, C arrow ऐसा A plus B भी लिख सकते हैं आप. Some means the operators which generally we use in our normal life. The same thing we can use in this algorithm. But when you go for the programming languages, there will be rules and regulations there. That you are in some languages your equal symbol should be like this. In some languages the equal symbol should be like this. In some languages the equal symbol should be like this. Like this there will be so many syntaxes, so many rules and regulations will be there when you go for the programming languages. But when we are developing an algorithm, there is no headache of all these things. Simply
you can use the normal English and the normal mathematical expressions here. That gives you the result. This is writing an algorithm for a simple addition of two numbers. So as I told you that for the same task you can write n number of algorithms here. This is the first algorithm I have written to perform addition of two numbers. Let me show how we can write the other algorithms also. This is this is your add. Let's say this is your algorithm 1. I am going to show other algorithm also to perform the same task. The first one, the same, I am giving procedure, name of the algorithm as add, and the second one is declaring the variables integer a, b, c. The third one is read a comma b. Fourth step is c is equal to a plus b. Fifth step is print c. Now you can observe the same result you are going to get here. This is algorithm 2. Now let me go for algorithm 3. Okay. Next one. Procedure add. Next one is first point. Second point, integers a, b. Third one, read a, b. Fourth one, a plus b. Fifth, print a. This is also one more algorithm which also gives the same result to you, because he asked you to perform addition of two numbers. He didn't specify you to perform c is equal to a plus b. So I have not used one more variable here. I have used only two variables here, and I am storing the result in one of that variable here. Now you can see for the same task I have written 3 algorithms. Not only 3, you can write many more algorithms also for the same task here. I have shown 3 different algorithms here. Once again I am repeating, there is no headache of declarations, that keywords, what is the for integer, what is a keyword we have to use for integers. There is no headache like this. You can write the algorithm with simple English and simple mathematic terms here. Okay, so this algorithm gives you addition of two numbers. This algorithm also gives you addition of two numbers. This algorithm also gives you addition of two numbers. If you want, you can write few more algorithms also for the same addition of two numbers here. This is your first topic. So what the things we have discussed here, the first thing is why we have to write an algorithm instead of directly writing the program. The second thing we discussed is what is the definition of an algorithm. The third one is how to write the algorithm. This is about the introduction of an algorithm we have discussed here. Now, in the next session, we are going to discuss that among these all algorithms, which one is called as a best algorithm. I have shown you for the same task, we are writing n number of algorithms. So, among these n number of algorithms, which one will be treated as a best algorithm, on what basis? Means, किस algorithm को हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो ईजी हो जाता है. What are the bases? हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वही algorithm बेस्ट है? That we are going to discuss in the next session, that is time complexity and space complexity.